You are currently the only person in this conference. Hello. अरे यार
चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन. पेन आ गया. आई नो प्रिंट आउट नहीं मिला है अभी, ठीक है, तो मिल जाएगा जब भी प्रिंट होगा. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डील विद इज Belem Declaration. During the Amazon Summit, the eight South American countries have signed a Belem Declaration. It is an agreement signed among the South American countries known as the acronym Amazon Cooperation Treaty Organization, ACTO. जैसे you have NATO, North Atlantic Treaty Organization, but that's a collective defense pact. वो अलग चीज है. It is not a collective defense pact. It is more about an environmental pact. The countries of South America has come together to basically protect Amazon, the lungs of the earth. Particularly, you call them Amazon rainforest. The declaration reflects the joint goal of ये सारी countries हैं, पढ़ लेना. It consists of 130 जो भी objective वगैरह. Belem Brazil में sign हुआ. First we need to understand significance because we know environmental change is going on, and in that Amazon has a very significant role to play, and we know the agreement. Paris Agreement that focuses on few things. We know already there is something called adaptation and something called mitigation. The two components of every environmental change or fight against it. Adaptation, and the second one is mitigation. Both are different. Adaptation means that whatever changes have come, I will adapt to it. Mitigation means I will not allow further changes to come. So every country has a different requirement. Adaptation is what the developing countries are demanding because they do not have the technology resources of adapting to the current change. Mitigation is what the developed countries are demanding, and Paris Agreement focuses primarily on mitigation. This gives you the key rule of IR that in international affairs, whatever the powers dictate becomes the norm. The developing countries are more in this world. They want adaptation, but still the Paris Agreement focuses on mitigation because, of course, the developed country wants it and they may know how to arm twist the developing countries. So in that context, you need to understand that it is a kind of both adaptation mitigation. Belem Declaration. It is for Amazon rainforest, the so-called lungs of the earth. Okay, remember that. The Belem Declaration supports sustainable use of Amazon biodiversity resource and value of indigenous knowledge for conservation. सबको पता है बकवास, लेकिन क्वेश्चन ये है, the thing is there is a person in there is a different kind of people rising in power. जो मैंने पहले भी समझाया था, soft dictators. They are rising in power. है क्या? हाँ, kind of illiberal democrats and all. The soft dictators are rising in power. They have peculiar features. The first feature is they rise in democracies. Why they are called soft dictators? Because what do you understand by the word dictator? Dictator सुनते ही कुछ दिमाग में आता होगा ना. What it comes to your mind? Normally I am asking, not scholarly, generally. They do whatever they want. और कुछ? Power concentration or kind of power concentration. Takes control forcefully. Forcefully. There are few features of dictators. First, they come by force in power, and they use the force to maintain the power. That's the prime feature. For example, Hitler also rose in democracy. तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, democracy has a weakness, a fundamental weakness, but that weakness is not of democracy but of the people. That often dictators rise in democracy only. आप चाहे हिटलर का एग्जांपल ले लीजिए, एंड इफ यू नो द फर्स्ट वन, नेपोलियन, शायद आपको पता हो थोड़ा, नेपोलियन बोनापार्टे, he rose to power by using a practice called referendum. He asked the people of France, would you like to have me as a dictator? And they are like, okay, fine, sir. Why?
because different reasons they were put up, because this is a fundamental weakness among humans. Whenever we are in a crisis, we like to go toward a strong man, something we call alpha man. The biggest problem with human psyche is jab bhi when we are in problem, we look toward not the most dependable but the most strong one. And they know how to manipulate your vision. They're very good at making one thing, dream. They're very good at making you dream, अच्छे दिन, ठीक है? So that kind of दिन will always, I and I doesn't matter, but they're very good at convincing it. In that, हाँ yes, मुसलमानी की बात होती है. In that context, we are reading this because Bolsonaro, who was the president before the current president in Brazil, he was one of the soft dictators, including Donald Trump, Viktor Orban. India में नाम नहीं लिखने किसी का, ठीक है? Duterte. These people are same. They have same features, same quality. Everything is same. So Bolsonaro, when rose to power, he was environmental denier. जैसे डोनाल्ड ट्रम्प कहता था कि environmental change कुछ नहीं है, it's a hoax of the developing country to extract money from us. He literally denied and he withdrew America from Paris Agreement. Same was the Bolsonaro. He was like, environment change कुछ नहीं है, it's a hoax. तो ऐसे बेवकूफ लोगों को हम पावर दे देते हैं. That's a fundamental weakness, but nonetheless, इस context में, because he is now out of power, so what the countries decided कि हम दोबारा नहीं सोच सकते कि somebody will rise in power and do the same. So they are deciding कि we sign the agreement beforehand, ताकि अगर बाद में somebody comes to power like this person, even then person has to obey an agreement. बात समझ में आ रहा था context why we are signing this agreement? ठीक है, it has introduced financial mechanism also. Obviously, it is very necessary for what? Sustainable development. What is sustainable development? Development that meets the need of present without sacrificing the future generation to meet their needs. इसका main point क्या है? To prevent point of no return in Amazon. Of course, हर climate change में एक stage होती है जिसके बाद you cannot reverse it. वो current हमारी हम मान के चलते हैं it is world level पे हमारा presumption है, हो सकता है गलत भी हो, scientific assessment में कमियां होती हैं, हो सकता है 1.5 भी हो या फिर 2.5 भी हो सकता है, but generally it is assumed that if the climate, if the global warming reaches up to 2 level from pre-industrial level, then it will be at the point of no return. हम वापस नहीं ला पाएंगे. इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट कोशिश कर रहा है that the global warming do not reach to 2 degree and preferably to 1.5 degree. याद रखिएगा पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट क्या है? 1.5 degree Celsius and the upper limit is 2 degree Celsius. ठीक है, तो वी आर टेकिंग अ मार्जिन ऑफ 0.5. कोई कंट्री एक्सेप्ट इंडिया, इस केस में यू कैन प्रेज द गवर्नमेंट दैट एक्सेप्ट इंडिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नॉट ओबेइंग देयर टारगेट्स. खासकर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट ओबेइंग देयर टारगेट. चलिए वो तो चलता रहता है, ठीक है. ऑफ कोर्स कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन एंड जीरो डिफॉरेस्टेशन बाय 2030. It's a target. I told you there are few conventions which are very important world level pe. One is Paris related to climate change. Another is Convention on Desertification. That is also very important. That aims to achieve zero deforestation. Why? Because there is a warning by a committee known as, ये वैसे आप environment में detail में करेंगे, but nonetheless I'm telling you, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. It has given a clear warning that by 2050 we need to become carbon neutral. Carbon neutral means the whatever amount we will limit we will fix, and by 2100, by the end of this century, if the world does not become carbon negative, means we are not emitting, we are even fixing whatever is in the atmosphere, the devastation will be unprecedented. There is a clear warning by IPCC. सबको समझ में आ रहा है? Please remember this. By 2050 we have to become carbon neutral, and by 2100 we have to become carbon negative. If we are unable to achieve this target, then there are high chances the kind of climate change you cannot imagine. What do we mean by climate change? Erratic weather patterns. जैसे आप look at what is happening to Himachal. पूरा Himachal has been declared as a calamity zone. The entire Himachal is now a calamity zone. पहले इतना बड़ा calamity zone नहीं होता था. Usually there used to be localized calamities. अब पूरा का पूरा state ही calamity zone डिक्लेयर कर दिया गया है, because there are so many landslides and people are getting killed. Why this all is happening? Climate change. A few years back,
चेन्नई में फ्लड्स आए थे, सीवियर फ्लड्स। उससे पहले उत्तराखंड में सीवियर फ्लड्स आए थे, पूरा उत्तराखंड वॉश अवे हो गया था। तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई दीज इवेंट्स आर हैपनिंग? इन दिल्ली में देखिए कितनी erratic वेदर आया, देयर आर सो मच ऑफ रेन विद इन few days and it's very erratic। आप देखिए आज बारिश हो गई, कल धूप थी पूरी। Why is it happening? There is no predictability। कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। Why is it happening? Because of climate change। Climate change will bring erratic weather patterns which we will not be able to predict। समझ में आ रहा? तो ऐसा नहीं है कि we love earth, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। we love ourselves and that's why we love earth। ठीक है, we are trying to protect earth। earth is fine, अगर हम चले भी जाएंगे तो अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ही अपना सिग्निफिकेंस बनाए हुए हैं, बाकी अर्थ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा, वो रिकवर कर लेगी अपने आप को सम बिलियंस ईयर में हमारे जाने के बाद, पर हम गायब हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रीच टू मार्स। ओके, अर्थ से हमारा इकट्ठी होने वाली है, ठीक है। अर्थ से हमारी जस्ट फ्रेंड वाली बात हो जाएगी, तब हमें नया पार्टनर चाहिए। नया पार्टनर कौन बनेगा? मार्स, ठीक है। एक और रीजन भी है, बिकॉज राइट नाउ वी आर ऑन ओनली वन प्लैनेट। इफ एनीथिंग हैपेंस टू अर्थ वी विल बी एक्सटिंक्ट। इसलिए वी वांट टू रीच टू मार्स, देन वी विल बी ऑन टू प्लैनेट्स। द चांसेस दैट ह्यूमैनिटी विल एवर लीव दिस यूनिवर्स विल गो टू जीरो। इसलिए मेन रीजन, इसलिए हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं टू रीच टू मार्स। यू गेट द पॉइंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच टू मार्स फर्स्ट। बाकी जिसे अयोध्या जाना वो जा सकता है, ठीक है। जिसे मैका जाना है वो भी जा सकता है। हमें कहाँ जाना है? मार्स पे, ठीक है। इट्स प्रायोरिटीज, बट रिमेंबर दिस, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टीटी एज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज। इसे याद रखिएगा। बैलम डिक्लेरेशन क्या है, व्हाट आर द सिग्नेटरीज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। तो प्रीलिम्स में एटमोस्ट आ सकता है, बट इज बैलम डिक्लेरेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैलम डिक्लेरेशन। उसमें मल्टी ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो अब बचे ही नहीं है, वो ओनली वन ओनली टू वाले हो गए हैं, ठीक है। तो एनीवे प्लीज रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स। What is ACTO? याद रखिएगा, ACTO members, these are the members। Objective: ACTO aims to harmoniously develop Amazonian territories and was created in 1995 to implement the goal of ACT। A treaty was signed because of which we have created Amazon Cooperation TT organization। This organization has recently signed the Belem Declaration, ठीक है। तो ACTO is the old body, अभी नहीं बनी है। ACTO is the old body created by the Amazonian territories to develop Amazon in a sustainable manner, to protect it, the indigenous knowledge, the heritage, ठीक है। Please remember that। बाकी ऐसा कुछ दिखता है, ब्राजील, ठीक है, ऊपर वाला। About the Amazonian rainforest, earth species ecosystem extend। The Amazon rainforest spans around most of the countries। अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, the north साउथ अमेरिका में, द नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर कवर्ड बाय अमेजन। देखिए सच अ वास्ट एरिया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ। प्लीज रिमेंबर दैट। क्या हुआ? लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवरिंग अराउंड 60% ऑफ द ब्राजील एंड द पार्ट ऑफ अदर कंट्रीज। की फीचर: इट होल्ड्स अराउंड 10% of all earth known species and we do not know everything। there are so many species on earth जो हमें पता ही नहीं है, because they are very micro in origin। हो सकता है हमारे आसपास भी करोड़ों स्पीशीज हैं which are we are unable to know because they are too micro in origin, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दैट। encompass around 1.6 billion acres of dense forest। fresh water में it contains 20% of global liquid fresh water। liquid, not frozen। frozen तो you have in Antarctica and Arctic and Arctic is about to melt very soon, ठीक है। तो जल्दी चले जाओ जिसे जाना है। मालदीव भी जा सकते हो, वो भी जाने वाला है कुछ समय में। मालदीव एंड दीज कंट्रीज जो आइलैंड नेशंस है ना ऑन द इंडियन ओशन, दे आर अबाउट टू गो एक्सटिंक्ट। 20 से 30 साल की कहानी बची है, तो जल्दी घुमाओ होने से पहले वो गायब हो जाए। अमेज़न बेसिन इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता ही दिया सर, सब है, बाकी पढ़ लेना यार, छोड़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज बात है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस वाले में फ्यू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ACTO, ठीक है। व्हाट इज द अग्रीमेंट कॉल्ड बैलम डिक्लेरेशन, व्हाई इट वाज साइंड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, व्हाट पेरिस एग्रीमेंट डील्स विद, and what are the arguments of both parties? Which are the both parties here? The developing and the developed, ठीक है। these are few things you must remember। अब देखिए क्रिमिनल लॉज में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव 3 लॉज आए हैं हमारे पास। आपको अगर आइडिया हो तो हमारे पास वी हैव लॉज नोन एज IPC, CRPC एंड
CPC. These are three main laws that deals with Indian judicial system. IPC is often used by police. Indian Penal Code, imprisonment and crimes are carried out by, नाम में ही देखिए Criminal Procedure Code. It is used by the courts. For criminal process you have CRPC, for civil process you have CPC. But what is happening, CPC we have overhauled earlier. पहले हम कर चुके हैं. The IPC and CRPC, they are still colonial in origin. इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था, there was an argument that India did not gain independence in 1947. It was a transfer of power from a white sahib to a brown sahib, because majority of the things that you see in India are still of British origin. उन्होंने ही बनाया था. We are carrying that forward. तो comprehensive reforms have come, for good or bad वो एक अलग बात है, but yes, comprehensive reforms has come. और इसको हम करेंगे कई सारे करंट अफेयर्स क्लास में, एक में नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा रिफॉर्म है, बिकॉज दे आर ओवरहॉलिंग द एंटायर लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया. एंटायर लीगल सिस्टम, इट विल हैव रिपरकशंस एंड इट विल रिक्वायर डीप एनालिसिस. तो हो सकता है हम 6-7 करंट अफेयर्स क्लास में हर बार कुछ ना कुछ पार्ट करेंगे इसका, ठीक है. दिस टाइम वी विल डू फ्यू थिंग्स. द 3 bills that have been introduced to repeal IPC बना कब है? 1860. CRPC 1973 ओरिजिनली बना था, बाद में से रिफॉर्म कर दिया गया था. आपको कॉर्नवालिस कोड वगैरह है मॉडर्न हिस्ट्री में. एंड दिस ऑल स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स इटसेल्फ, बिकॉज बिफोर ब्रिटिशर्स आवर लॉज वर नॉट रिटन. India had a tradition of oral traditions. We used to transmit our knowledge orally from one generation to another generation. So Britishers, when they came, and they had a habit of codifying things, they were like, we want to write it down. So they created the legal system that you see today. आज का जो भी लीगल सिस्टम आप देखते हैं ब्रिटिशर्स का ही बनाया हुआ है, चाहे अच्छा है बुरा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो वी आर ओवरहॉलिंग देम. एंड द थर्ड वन इज, so these 3 laws are being overhauled. Basically आप मान के चलिए the entire criminal justice system will be changed entirely. हल्का फुल्का भी नहीं, entire change is there. The 3 laws that have been introduced: भारतीय न्याय संहिता, no imposition of Hindi on anyone, ठीक है. भारतीय न्याय संहिता, basically it will replace IPC. And look at the changes. It will repeal 22 provision, change 175 प्रोविजन इंट्रोड्यूस. ये मान के चलिए पूरा लीगल सिस्टम को ओवरऑल कर दिया गया. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग चेंजेस. देखते हैं गुड है बैड है वो बाद की बात है, पर चेंज तो है. नेक्स्ट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. अगेन नो इम्पोजिशन ऑफ हिंदी. इट विल रिप्लेस CRPC. इट विल रिपील 9 प्रोविजंस ऑफ CRPC, चेंज 160 प्रोविजंस एंड इंट्रोड्यूस 9 न्यू प्रोविजन. टोटल कितने सेक्शन है? बस पढ़ते पढ़ते निकल लोगे कुछ लोग. जिनका लॉ ऑप्शनल है उनकी तकलीफ बढ़ गई है, बिकॉज पूरा लीगल सिस्टम ही ओवरऑल हो गया है. लास्ट इज भारतीय साक्ष्य बिल. साक्ष्य मींस एविडेंस इन हिंदी, ठीक है. तो इट इज इंटेंडेड टू सब्स्टिट्यूट इंडियन एविडेंस एक्ट. इट विल रिपील 5 एक्सिस्टिंग प्रोविजंस एंड प्रपोज टू चेंज 23 एंड इंट्रोड्यूस 1 न्यू. चलिए ये तो आपके काम का इतना है नहीं, until unless you are a lawyer or something, इतना जरूरी नहीं है. बट ये 2 बिल जो हैं, these 2 bill are very important even for GS. The third bill, the Indian Evidence Act, is not very important for you until unless you have a law optional. तब बात अलग है. Otherwise it is not important. But the upper 2 bills are very important. So few provision, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, we will keep on doing this bill in every Saturday. Something or other thing will come. एक साथ करेंगे तो आप फ्यूज उड़ जाएगा, किसी का क्या फायदा होगा, ठीक है. प्लीज रिमेंबर दैट. फर्स्ट इज भारतीय न्याय संहिता, ठीक है. द प्रोविजन ऑफ द संहिता विल अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय सिटीजन ऑफ इंडियन, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एनी एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया. दिस लॉ विल अप्लाई टू इंडियन सिटीजन्स. पहला नंबर तो वर्ड होता है सिटीजन. व्हाट इज सिटीजन? सिटीजनशिप नहीं, वो तो ठीक है, बट व्हाट इज सिटीजन? हाँ, राधा सेडिशन रिमूव हुआ है, उसकी जगह पे जो आया है वो कुछ खास अच्छा नहीं है. Citizen, first you need to understand, we know what is a state. State means a territory having a population ruled by a sovereign. Government is not the part of the state. याद रखिएगा. सरकार आपको कुछ भी बोले,
but real life में government is not part of the state. Government is a tool of the state to exercise sovereignty. तीन component है state के पास, territory, population, sovereignty. अब sovereignty, how would state exercise sovereignty? Because state is an idea. So for that we have a government. So government only and only exercises sovereignty of the state. Government is not the state. तो भारत माता और भारत सरकार अलग अलग है, ठीक है? भारत माता भारत सरकार अलग अलग है. That's the difference between राजद्रोह and राष्ट्रद्रोह. Bal Gangadhar Tilak said this when the Britishers accused him of doing the Rashtradroh. He said, "No, I am not doing the Rashtradroh. I am doing Rajdroh. I am revolting against the king, not the state." Clear है? Remember the reference. It will come handy later on. So second thing, citizen of India. Citizen means होता है any person who has a membership of the state. If a state is a club, then for that club you need a membership to avail its benefits and have the duties. For example, you want to play golf, so for that you become the member of a golf club. If you are a member of a golf club, then only you can use the facility of the golf club. That's happened na? Similarly, to use the facility of a state, you need to be a member, and the member is called citizen. Okay? In monarchy, they are called subjects because they are not citizens. Citizen subject, what is the biggest difference? Yes. Citizens have rights. Subjects have only duties to serve the Lord. Who is the Lord? Maybe king or the king. That's the biggest difference. इसीलिए government wants you to convert into subjects. And I always say, if you have never protested against the government, कोई भी हो, Congress, BJP, doesn't matter. If you have never protested against the government in your entire life, then you are not a citizen. You are just a subject. वो व्यक्ति जिसके साथ आपने जीने मरने की कसमें खाई हैं, 2 हफ्ते बाद आप उसमें कमियां निकाल देते हो. 60 साल में आप में सरकार में कमी नहीं निकाल पाए, ऐसा नहीं होता. ठीक है? Getting the point to understand both differences. And the third thing is any person in any place. This one is significant. Any person at any place targeting a computer resource located in India. Why it has been done, you will understand when you will do internal security. Internal security mein you will do cyber security. So cyber security mein there is a big problem. We are unable to find out who committed the crime. For example, a computer can target Indian Aadhaar system. A computer from Pakistan will target Indian Aadhaar system. But there is no guarantee whether that computer was really operated by Pakistani or not. हो सकता है somebody from America hacked a computer in Pakistan to carry out an attack in India. And if we retaliate against Pakistan, what is the proof कि whether Pakistan used it? This is called denial. And it's very, very, very hard in cyber world to pinpoint the responsibility. आपको इतना पता लग जाएगा from where the attack came, but you cannot be certain whether that attack really originated there or not. और खासकर majority आपका phone भी इस्तेमाल हो सकता है. We all have phone connected to internet. Who is using a phone? You have no idea. मैं आपको पहले ही बताया था, we live in a data world. Today the biggest resource is data. The Google and Facebook and Apple, they trace every second of your life. They know more about you than you yourself. Every single time you are online, they generate data points. ठीक है? And there are no, आजकल तो आप लोग हर कोई ऐप भी डालता फिरता है फोनों में. ठीक है? You keep on installing this app, that app, that app, this app, and though all those apps collect data, and then they sell this data to anyone who bids high. They don't care about your privacy. Nobody cares. तो ऐसा कोई privacy है भी नहीं आज की दुनिया में. ठीक है? Clear है यहाँ तक? Please remember that's why this provision is very important. Now under these laws, anyone, even if you are not an Indian or you are not located in India, if you attack or you participate or you're the part of any system that has done anything in India, you will be held legally liable. पर ये fiction ही है सिर्फ. अब उसे पकड़ोगे कैसे? मान लेते हैं that is an American citizen. Of course, America will never give you its citizen to you. कोई नहीं देता. Neither India will give its citizen to America. It will say, okay, fine, you have proof, give me the proof, I will prosecute my person. But nobody gives their citizens. So ये बस कहने की बात है. इसको enforce करना virtually impossible है. बात समझ में आ रहा है सबको? There is complete denial of any service, but nonetheless अच्छा लगता है power होना. काम आए ना आए, ठीक है? अगला देखते हैं punishment. Punishment में death है,
imprisonment for life. imprisonment for life का मतलब होता है imprisonment for the remainder period of the person's natural life. अब 90 साल के व्यक्ति को imprisonment मिली है तो obviously बात है 20 साल की तो मिल नहीं सकती, जब तक वो जिएगा तब तक रहेगा. And if you are young तो you will get at least 20 years. Generally life imprisonment का मतलब होता है 20 years, or if you are old then howsoever you live. ठीक है. नेक्स्ट imprisonment which are two description, namely rigorous और सिंपल. जैसे आप लोग अभी कौन सी imprisonment में हो? rigorous, self imposed rigorous imprisonment. ठीक है, यहाँ पे आके पढ़ रहे हो, मेरी बकवास सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि यूपीएससी निकालना है. ठीक है, so that's a rigorous imprisonment. Other is simple. rigorous में what is the component? Forced labor. When you are given rigorous imprisonment you are made to work. हाँ, पैसे मिलते हैं उसके, but you have no option. आप जेल में जाके ये नहीं कह सकते मैं काम नहीं करेगा. सिंपल में ये है, यू हैव एन ऑप्शन टू से आई विल नॉट वर्क. ऑफ कोर्स आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगा, बट काम तो करना पड़ता है. ठीक है, वैसे सबकी रिग्रेस होती है, कौन मानता है यहाँ पे. ठीक है, आप जेल जाओगे तो कुछ भी करवाते हैं वो लोग. फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन्स, ये एक अच्छा इन्होंने ऐड किया है. कम्युनिटी सर्विस अभी क्यों ऐड किया गया है? ये गुड प्रोविजन है, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, जेल्स आर फेसबुक ऑफ क्रिमिनल्स. इफ यू गो टू अ जेल देयर इज 100% गारंटी यू विल नॉट रिमेन अ नॉर्मल पर्सन. बिकॉज अभी क्या है, अभी आप केवल बातें करने में आ गए हो, फिर आप पे लिंक्स भी होंगे बातें करने के लिए. बात समझ आ रहा है? तो इसीलिए कभी भी नेवर इट इज प्रेफर्ड टू सेंड एनीवन टू जेल, बिकॉज द सेकंड यू सेंड देम टू जेल दे विल मीट द सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, द पीपल हु हैव लिंक्स, द पीपल हु हैव लिटरली कमिटेड रियल क्राइम्स. इसलिए प्रेफरेंस ये होती है कि कम्युनिटी सर्विस देनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान जी, उन्होंने कुछ नहीं किया था. ठीक है, तो सलमान खान व्हेन वाज गिवन इम्प्रिजनमेंट फॉर दिस ब्लैक बक केस, हम साथ साथ है वाली मूवी का ब्लैक बक केस, सो ही वाज गिवन इम्प्रिजनमेंट. तो उससे बढ़िया क्या होता, द कोर्ट कुड हैव गिवन हिम कम्युनिटी सर्विस. ही वुड, द कोर्ट वुड हैव सेड देखिए यू आर अ बिग पर्सनालिटी, एनीवे यू विल गेट अ बेल. तो क्या फायदा जेल में डालने का, तुम वैसी बेल ले लोगे पैसा खिला खिला के. सो व्हाट कैन बी डन इज you will become the brand ambassador of the forest department for the rest of your life, free of cost. जिस चीज का वो करोड़ों रुपए चार्ज करता है, that could be done free of cost. Both will be the winner. सलमान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हाँ ठीक है, ठीक है, he could have saved himself from the jail time और पेनेंस दिखा सकता था, देखो मैं कितना बढ़िया व्यक्ति हो गया हूँ, सुधर गया हूँ मैं. ठीक है, इस पॉइंट पे याद रखिएगा, every law does not, any law does not aim to punish, they aim to reform. कोई भी लॉ सरकार बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, they are not trying to punish anyone, they are trying to do two things. पहला, to prevent you from doing a crime. Second, they want to reform you for a good person. वो punishment is never a preferred option. That's why ये provision अच्छा डाला गया है, that is community service can be given. ठीक है, of course crime के ऊपर डिपेंड करता है, heinous crime में नहीं मिलेगा community service. Comprehensive changes in the criminal law. Let's see what are the changes. पहला है, this law prioritize crime against women and children. The Bharatiya न्याय संहिता will replace crimes against women and children as its primary focus. अब इसमें एक इशू है, it still does not make it illegal, that is the marital rape. हाँ राधा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. marital rape अभी भी illegal नहीं है. ठीक है, इस पूरे लॉ में कहीं पे भी मैरिटल रेप की बात नहीं हुई. हाँ बस ये है कि अगर इफ अ गर्ल इज बिलो 16 years of age, even if you are married, then it will be considered rape if she is below 16 years. so what do you think? पहले तो 16 years पे बात कर लेते हैं. जस्टिफाइड एज है क्या, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? अगेन अंडरस्टैंड, मैं पहले बताऊं, लॉज डिपेंड्स ऑन मोरालिटी. what is law? laws are to outlaw a crime, and crime depends upon the time you live in. crimes vary from time to time. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भांग लीगल है, मैरिजुआना इलीगल है, जबकि दोनों ही hallucinating compounds हैं. marijuana and bhang both are hallucinating compounds, but marijuana is illegal, bhang is legal because it is associated with Hinduism. शिव जी का प्रसाद है, भोले बाबा का. ठीक है, ठीक है, तो इट्स लीगल. would it be the same in Pakistan? no, because the morality there is different. so what you consider as a crime depends upon your own morality. so for example, in a village, most of the women lives in that घूंघट thing. उनके लिए अगर घूंघट हट जाए तो बड़ी बात होती है. यहाँ पे वुमेन्स आर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आउटसाइड ऑफ द स्ट्रीट, नोबडी केयर्स. डिफरेंस कहाँ आया? उनके लिए तो ये पनिशेबल बाय डेथ होना चाहिए.
The people who come from a particular rural background, for them it will be like committing a murder. She is smoking, how dare she? What changed? Value system changed. First, before giving a judgment कि something could be bad or good, understand in what time you are situated and about what time you are talking about. ठीक है, पहली चीज. सेकेंड चीज, तो एज का समझ में आया. एज 16 हो 17 हो डजंट मैटर, कंसेंट की बात होती है. इसमें भी बहुत ड्रामा हो रहा था. पॉक्सो एक्ट है हमारे पास, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, विच इज जेंडर न्यूट्रल. Any kid below the age of 18, male or female, doesn't matter. They can be prosecute other person in case of POXO. पर उसमें भी बहुत ड्रामा रहता है. The thing is, what about consensual sex? मान लेते the girl is 14 years of age, the boy is 20. If the consensual sex happen, then अब कई हाई कोर्ट्स ने have said if there is consent then they can be free. तो ये थोड़ा आप समझिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है. ये बहुत सारे पैरामीटर्स में बन जाते हैं. What is about the consent? ठीक है. अब दूसरा ये है वाई मैरिटल रेप. तो एज का समझ में आया. एज को हम डेफिनेट नहीं कह सकते. 18 होती तो ज्यादा बेटर रहता, पर ठीक है, अभी पास नहीं हुआ है. मे बी 18 रिवाइज हो जाए. व्हेन डिबेट विल हैपन इन पार्लियामेंट, इफ हैपन, तो रिवाइज हो जाएगा. एनीवे टेंशन मत लो, इस साल में ये होने वाला है नहीं. कोई 24 में इलेक्शन है, कोई सरकार इतना बड़ा रिस्क लेगी नहीं 24 में इलेक्शन में ड्रामा करने का. तो होगा आई थिंक 2-3 साल बाद ये पास होने वाला है बिल. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग अबाउट मैरिटल रेप. बताइए ठीक करा इन्होंने by not having marital rape in the law? उसमें एक थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है. that how would you prove it? देखिए, if you're unmarried and something happens, you can prove it. The problem is you get married, have sex in the first night, and then you go to the क्या बोलते हैं jail, and you go to the police station. भाई इसने रेप किया है. अब भाई हुआ तो हुआ है, लेकिन रेप हुआ है या नहीं हुआ है कैसे पता लगेगा? जब यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम में आता है. आई अंडरस्टैंड. अब इसमें रिमेंबर वी अंडरस्टूड अर्लियर आल्सो दैट इंडिया में वुमेन लॉज आर वेरी स्ट्रांग, very 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 strong. If a woman after marriage goes to a police station and says that these people are harassing me for dowry, the entire family is behind bars. उसके बाद FIR and investigation. It's a very strong law, but the problem is majority of the cases filed are by the woman who does not deserve those laws. They file them out of revenge. कोई और रीजन होता है, पर ये फाइल कर दिया जाता है. And the women who literally deserve the protection of these laws are either incompetent or unaware. Obviously बात है, if you are competent enough to go to a police station, वहां जाना बहुत बड़ी बात है. You have to revolt against the entire family. आपकी भी family, उसकी भी family. Then you have to think of consequences. बहुत सारे consequences. तो पुलिस स्टेशन जाना कोई आसान बात नहीं होती है. And if you're going there, इसका मतलब you are already powerful. वरना कैसे जाओगे? And if you're already powerful, then आपको abuse करने की हिम्मत किसकी है? If you're powerful, nobody can abuse you. You are weak, that's why somebody is abusing you. And if you're weak, how would you reach to police station? This is the biggest problem in the laws. समझ में आ रहा है सबको? Laws grant protection, but the people who deserve either incompetent or unaware. And this applies to every law. The people who are aware but does not need the protection uses them. इसलिए majority of the cases filed in women law, particularly section 498A, cruelty to women, जो अब रिपील कर दिया जाएगा, उसके लिए कुछ और आएगा. Cruelty to women. Supreme Court itself said it is a legal terrorism. The Supreme Court क्या रहा है? It's legal terrorism, तो must be something wrong. बाकी सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी बोलता है, क्या टेंशन नहीं पालनी चाहिए उसके में. अगला समझ में आ गया. क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इट हैज ब्रॉट न्यूमरस चेंजेस. मैरिटल रेप अभी भी नहीं है, पर बाकी चीजों में दे आर ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स. बट हैविंग अ लॉ डज नॉट गारंटी प्रोटेक्शन. इंप्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हम पे तो पॉक्सो भी है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ, और सबको पता है हमारे रेसलर्स का साथ क्या क्या हुआ बेचारे. सोचिए, दीज वर रेसलर्स, कनेक्टेड पीपल, पावरफुल पीपल. जब वो लोग कुछ नहीं करवा पाए, तो आप अपने बारे में सोच लीजिए. They are literally powerful people. छोटे मोटे लोग नहीं है. If they say something, the world listens, and they could not force the government to punish that person. तो नॉर्मल इंसान की आप सोच ही लीजिए. That is the problem I always say. Laws strong हो ना हो doesn't matter. Judicial and police system strong होना चाहिए. If you have a good police system, if you have a good judicial system, then even the laws are moderate, not strong. They will work. They will always work. But if you have a strong laws, weak judicial and police system, doesn't matter. They will never work. बात समझ में आया? Please remember that point. इसी को हम बोलते हैं. The concept is
soft state. There is one concept called rule of law. Rule of law का मतलब होता है that law is king, lex rex. Whatever law will say, you will be punished. If the law says jumping a red light will be fined by 200 rupees, then either I jump or the Prime Minister of India jumps. Both will be fined 200 rupees. That is called rule of law, basically, in a nutshell. But soft state is an exception to rule of law. These are those states where rule of law is selective. For example, कोरोना टाइम में आप सबने देखा होगा, कोरोना टाइम में देवर लॉट ऑफ वीडियो पुलिसमैन वर बीटिंग पीपल हु वर आउटसाइड. भज के लाजियां बजाई थी उन्होंने, आपने देखा होगा, लाठियां पड़ी थी लोगों में. But the Prime Minister of India was having a rally in the same corona period and he was like, देखो कितनी भीड़ आई है. He was not fined. The chief ministers of various states, they held rallies, they were not fined. So what it signals the common people. If you are powerful, if you are connected, you are above the law. And that's why majority of you people are here for power. Because when you see such kind of system, the society develop craving for power. You feel like that power is the only way to ensure my security and my survival. And that's why majority of the people in civil services, they are for power. Paisa to private mein bhi hai. They are here for power. And why this power craving? Because society provides you status with power. And because this is a society that worships power only. For example, bante aise log. So even if a common person violates a corona guideline, he must not be punished. हो सकता है छोड़ दिया जाए, I don't know, warning. But if Prime Minister of India does this, उसको तो पक्का फाइन होना चाहिए. Because that person signals the entire population. अगर पीएम का फाइन होगा तो people will be like, हाँ ठीक है. If कल कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी रोकेगा तो you will be like, okay fine. Because if you can fine the Prime Minister of India, then of course if I violated the law, I must be fined. But when that person is not fined and you are, then you feel very angry. ये क्या बात होती है, मैं भी पावर में जाएगा. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज सेडिशन. पहला आता है व्हाट इज सेडिशन. द लॉ, करंट लॉ सेज हाँ वो कई केसेस में हुआ था. यू हैव अ कमीशन, प्यारी सी कमीशन है जिसका नाम है नेशनल वुमेन कमीशन, द इनकॉम्पिटेंट कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, दैट कमीशन बेसिकली देयर वाज अ मैंगलोर पब केस. मैंगलोर में पब केस हुआ था, सम वुमेन वर देयर, दे वर हरेस्ड बेसिकली. तो जो चेयरपर्सन है नेशनल वुमेन्स कमीशन का, शी वाज लाइक, गए क्यों थे पब में, कपड़े छोटे पहने हुए थे. ठीक है, तो इतनी प्यारी कमीशन आपके पास है तो हैव इट. अंडरस्टैंड दिस. मैं पहले ही बोलूंगा, लॉज आर नॉट बैड, नॉट गुड. इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बैड, नॉट गुड. द पीपल हु रन देम आर गुड और बैड. If the same commission would have a person with a spine, so that person can protect people. जैसे मणिपुर केस में हुआ, it was later on, मुझे बाद में पता लगा था, उसको मैंने कवर नहीं किया था, that the women commission, national women commission got this report way back. उन्हें 2-3 महीने पहले ही ये रिपोर्ट आ चुकी थी कि something like this happened in Manipur and is happening in Manipur, पर फिर भी एक्शन नहीं लिया गया. तो आप समझ ही जाइए क्यों नहीं लिया गया होगा. ठीक है, अच्छे दिन थे इसलिए. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, सेडिशन याद रखिएगा. सेडिशन का मतलब होता है व्हेन यू इंसाइट हेट्रेड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, if you arise hatred among the people against a government established by law. The earlier provision was section 124A, of course, introduced by Britishers. Against whom? Against us. Because Indian nationalists were doing this kind of thing. Macaulay, Lord Macaulay. अरे भाई क्या हुआ? Lord Macaulay introduced this provision. आपका क्या बोलते हैं, गांधी, नेहरू, पटेल, there were a lot of people who were behind bars under this provision. और हिपोक्रेसी की नॉर्म यहाँ पे है. हमारे प्रिय है नेहरू जी, चाचा जी. So what happened? That person in 1936 they founded a union known as Civil Liberty Union. The purpose of that body was to fight for the people who are convicted. एक second.
हाँ, so सेडिशन समझ में आया सबको? सेडिशन का मतलब क्या होता है? That when you try to arise hatred against the government established by law. It was used by it was introduced on the recommendation of Lord Macaulay and was used excessively. इसी कॉन्टेक्स्ट में बाल गंगाधर तिलक said that there is a difference between राजद्रोह and राष्ट्रद्रोह. If I'm talking against my government, I'm not against my state. इसी पे तो इसीलिए अब क्या करा जा रहा है? This provision is being repealed. अब ऐसा नहीं है कि सरकार की आत्मा जाग गई अचानक से, बिकॉज राहुल गांधी द so that person promised that we will repeal sedition if we come to power in 2019. उस समय में बीजेपी ने इसका बड़ा ही बवाल बनाया था. देखिए, look at this party, it is in favor of the टुकड़े टुकड़े gang, that's why they are repealing sedition. अब वो खुद रिपील कर रहे हैं sedition, इसलिए नहीं कि there is a change of heart, it is because of Supreme Court. Right now the sedition law is on hold. It has been misused so much, the Supreme Court has put it on hold. No new FIR can be filed in sedition now. So they are thinking, why shouldn't I replace the provision? इससे पहले Supreme Court कोई judgment दे दे अनशन वाली. If law is not there, तो कहानी खत्म हो जाती है. So it is being replaced. That term sedition will be removed. The new code will have a, इसकी जगह पे एक बढ़िया सी चीज लाई जा रही है. किसके लिए बढ़िया वो उन्हें पूछना, पर है बढ़िया. ठीक है. Broader definition that encompasses act endangering. So sedition is being replaced by a provision that will have a wider definition, that if you carry out any act that is against the sovereignty, unity and integrity of India. ठीक है, अब ये क्या होता है मुझे नहीं पता, बिकॉज ये तो कुछ भी कवर कर सकते हो आप इसमें. कम से कम पहले ये तो था कि यू हैव टू कवर अ रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हेट्रेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अब तो कुछ भी कवर हो जाएगा, कुछ भी हम बोल सकते हैं. इफ यू आर डूइंग अ प्रोटेस्ट, इट इज अगेंस्ट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. आपने प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. द थिंग इज नाउ द टर्म इज इवन ब्रॉडर. तो ये तो मैं कहूंगा बैकवर्ड में चले गए हम. इसे हटाने की बजाय वी हैव मेड इट इवन बिगर एंड मोर वाइडर. वर्चुअली एवरीथिंग यू डू, if the government dislikes it, whichever government is there, they can use this to put you behind bars. Everything. So it's a very vast term अगर आप देखें तो. Sovereignty, unity and integrity, इसमें कुछ भी कवर हो सकता है. Next thing, the expansion includes activity that promote separatist sentiment and provide financial assistance to such endeavor. पहला आता है separatist sentiments. अब ये बड़ा ही subjective है, बहुत ही. मैंने पहले भी आपको समझाया था, somebody's terrorist is always somebody's patriot. हमेशा होता है. फॉर एग्जांपल भगत सिंह का आई टुक एग्जांपल अर्लियर आल्सो. भगत सिंह थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. टुडे वी नो दैट एज संसद. तो मान लेते हैं टुमारो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंग्स अ बिल अगेंस्ट गुप्ता कम्युनिटी. आई हेट दैट बिल. So what would I be allowed to throw a bomb in the Sansad? I will not hurt anyone, just like Bhagat Singh. I will just make the deaf government here. That was his argument. So how would the government will treat me? Of course, like a terrorist. Of course, like a terrorist, na. So same thing the British government did. For British government, Bhagat Singh did a terrorist act, and he was executed for the same purpose. But हमारे लिए, because he threw that bomb for us, तो हमारे लिए he is a patriot. It's always vary. Someone you call separatist will always be a patriot for somebody. Nagaland does not want to be part of India. Majority of northeastern state does not want to be part of India. कभी नहीं चाहती थी. There was a strong nationalist movement there. They want to separate from India. पंजाब में you know the problem. अब तो नहीं है, पर पहले थी. जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम you know. तो जम्मू कश्मीर में we killed a person called बुरहान वानी. Of course, हमारी नजर में he is a terrorist because he took up arms against the government of India. But मान लेते हैं tomorrow if the Jammu Kashmir separates from India, would they will have a स्मारक for बुरहान वानी or not? स्मारक बनाएंगे प्यारा सा, the Bhagat Singh of Jammu Kashmir. So always where you stand dictates who is terrorist, who is separatist, who is patriot. हमेशा डिपेंड करता है where you are standing, and that's why the narrative always change from the stand. So anyway, तो separatist sentiment allowed है. चलो ये तो point ठीक है, लेकिन this point is very vast. So we have no clarity कि how long this provision will be and how big this provision will be. Clear है सबको? So sedition has been replaced by sovereignty, unity and integrity of India. Next, अच्छा ये तो मैंने आपको बता ही दिया था. Stricter measure against sexual exploitation, instances of sexual intercourse under the false pretense, such as marriage, job promise, promotion, identity concealment, will contract at least 10 years imprisonment.
बिकॉज इसमें बहुत होता है, खासकर if you promise a woman of marriage and then you have intercourse and do not marry, it is considered rape. And after Supreme Court has given a judgment, now the rape definition is very vast. Supreme Court के मुताबिक any form of penetration, not only penile, any form of penetration of any object including is a rape. Right now, rape definition is excessively vast. अब क्या होगा? Because new provision has come. अब again Supreme Court में cases will go. Supreme Court will interpret them. New legal setup will be set up. अभी तो देखिए everything is settled. Now new provision means new interpretation. New interpretation means time. So ये मान के चलिए the second this law will be enacted, at least 5 to 10 years will take to create the legal precedence. कम से कम 5 से 10 साल के लिए it will create troubles, instability, because new provision means new interpretation. New interpretation means new disputes, and new disputes mean new court cases. सबको बात समझे? तो जुडिशरी का काम बढ़ने वाला है बहुत ज्यादा. आई होप कुछ कर ले वो लोग. Stringent punishment for rape and gang rape मैंने आपको बताया दिया. There will be harsh penalty for rape and gang rape. Perpetrator of the gang rape could face imprisonment up to even life imprisonment with death penalty. अब ये दूसरा डिस्प्यूट है. पहला सेडिशन था, दूसरा डेथ पेनल्टी. शुड वी हैव इट? क्या लगता है आपको? तो मेरी क्लास में बाकी लोग बताओ क्या लगता है? शुड वी हैव द डेथ पेनल्टी अगर मेजर ऑफेंस है? ठीक है. मेन आर्ग्यूमेंट इन फेवर डेथ पेनल्टी इज इट विल एक्ट लाइक अ डिटरेंस. It will deter a person from committing a crime. But understand, majority of the heinous crimes, particularly murders and rape, are crime of passion, not reason. Deterrence works on mind, not heart. Understand both difference. Deterrence कब work करता है? Deterrence is a rational feature. When you understand something and you are like, if you commit a crime, yaar, I will be punished. It's a feature of mind. But the majority of the crimes are crimes of passion. It happens at the point of time. हाँ कुछ crime होते हैं where of course you plan, plot and kill. वो एक अलग बात है. But they are always minor of the crime. Majority of the crimes are always crimes of passions. That penalty never works. This is not me saying. Law Commission has said. Law Commission in its report has said that death penalty never serves the purpose for anyone. Anyway, India में we never execute anyone. ठीक है, सालों में कभी जाके हम किसी को डेथ पेनल्टी दे पाते हैं. पेनल्टी मिल जाती है, एग्जीक्यूट नहीं होती. क्यों नहीं होती है? बिकॉज राइट नाउ इट इज हार्ड टू फाइंड अ पर्सन. वो होता है ना कसाई वसाई जो भी बोलते हैं, द पर्सन हु पुल्स द रोप. मिलते ही नहीं आजकल लोग, बिकॉज अ मेंटल, इट्स अ बर्डन, इमोशनल बर्डन. व्हेन यू आर गिविंग दैट पेनल्टी, व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट पेनल्टी, देखिए दैट पेनल्टी देना आसान है, एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है. क्या लिया? गुलेटिन लिया. ओके, फाइन 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 फाइन. इनोवेटिव आइडिया, गिलोटिन लिया, लीथल इंजेक्शन लिया. और कोई आइडिया बचा है किसी को मारने का? तो बताओ. गैस चैम्बर. हेलो, ठीक है. तो वी ऑल हैव हिटलर्स इन अस. ये बात समझ में आ गई मेरे को. ठीक है. बट नॉनदलेस डेथ पेनल्टी वैसे सर्व नहीं करता. अ स्टडी वाज कंडक्टेड इन यूएसए टू सी हाउ डज डेथ पेनल्टी वर्क्स. तो यूएसए में देयर इज अ डिफरेंस. यूएसए में, इंडिया में द यूनियन इज पावरफुल देन द स्टेट्स. यूएसए में इट इज रिवर्स्ड. The states are powerful vis-a-vis union. So the states of USA which abolished death penalty saw decrease in crime rather than the state which capped the death penalty. It is statistically proven because majority of the people who commit a crime, na, particularly heinous crime, they do not fear death. इतना ही fear होता तो crime नहीं करते. Obviously बात है, if you are committing a murder, rape and so that too severe heinous rapes, तो उस केस में क्या है? Of course you know this कि भाई मुझे डेथ पेनल्टी मिलने वाली है, तब भी आपने क्राइम किया. इसका मतलब यू आर नॉट फियरफुल ऑफ डेथ पेनल्टी. समझ में आ रहा है? डेथ पेनल्टी वर्क्स ऑन डिटरेंस एंड डिटरेंस इज अ फीचर ऑफ माइंड, नॉट हार्ट. एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम्स आर क्राइम्स ऑफ पैशन. तो एनीवे इसे रखा गया है, बट आई डोंट नो, रखो ना रखो, इट्स अप टू यू. तो खास फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज वैसे भी लॉ लगने वाला तो है नहीं. इफ यू आर पावरफुल, इफ यू आर कनेक्टेड, तो आपको क्या टेंशन है डेथ पेनल्टी हो ना हो. If you are powerful, then क्या होगा? You will pay somebody, that person will take the blame कि मैंने कराया काम, है ना? सलमान खान ने गाड़ी थोड़ी ना चढ़ाई थी, ड्राइवर ने चढ़ाई थी. चलिए, anyway, next definition of terrorism and consequence. The first word is terrorism. Terrorism याद रखिएगा, it's an organized crime plus just cause. What is organized crime? Any crime
that has a proper structure from the starting to the end. Particularly, for example, prostitution, drugs, and guns. These are the three largest organized crime in this world. How they work from starting to the end, there is proper people, and if you arrest them, doesn't matter, somebody else will come. इसलिए आपने सुना ना, हर दिन न्यूज आती है, पुलिस अरेस्टेड दीज पीपल हैविंग ड्रग्स, पुलिस फ्रीड दीज वुमेन फ्रॉम दिस ब्रोथल एंड ऑल. फिर भी चल रहा है. क्यों? बिकॉज दैट पर्सन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द चेन. If you arrest that person, somebody else substitute that person. So same analogy say, can I call government of India or government of any state as organized crime? Can we call police of India, any state police of India, as organized crime? क्यों, क्या फर्क है दोनों में? मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो 200 रुपए लिए थे उसमें घूस के. There is something और मैंने आपको बताया ना, morality always plays in. Depending upon where you are standing, things changes. ठीक है, a police person मान लेते हैं, police person carried out a firing and a person died. लाठी चार्ज मान लेते हैं. I carried out a लाठी चार्ज and some person died. Both case में a person died. One person gets a medal, other person gets the punishment. The thing is, when we signed a contract, contract का नाम क्या है? Understand everyone, Constitution of India is a contract. इसलिए पहली लाइन क्या है Constitution की? We the people of India. Legal fiction है पर मान लेते हैं. It is assumed when we sign this contract, we authorize the state to commit violence. इसीलिए Gandhi disliked the state. Gandhi was known as anarchist. Gandhi did not want a state because he was like, he believes in non-violence. And he said, because state possess police and police means violence, the state can never practice non-violence. And because of this, there is no need of a state. वो बाद में उसने चेंज करी अपनी theory को, because he said state is necessary evil. But nonetheless, understand, if you apply same principle, अब morality छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, if you apply same principle, yes, it is a kind of organized crime. वो बात अलग है, one is legitimate, other is illegitimate. That's the only difference. Both case में somebody is dying, both case में violence is used, both case में systematic structure is there. You are the SP of a district, order comes, do the lathi charge. You don't do the lathi charge, doesn't matter. You will be replaced, somebody else will come. He will do the lathi charge. It will never matter. You never matter. You're just part of the system. If you do not obey, you are removed from the system, somebody else substitutes you. और समझ में आया, एक legitimate है because people think is just, other is illegitimate. That's the only difference. बात समझ में आई? So remember this, constitution हो गया, terrorism. So this is called organized crime. When an organized crime has a just cause, it becomes terrorism. समझ में आया? Just for example, jihad. The terrorists who comes and blow themselves, kill people, they are part of an organized crime. It is well planned, well executed, but they have a just cause, jihad. अब एक चीज याद रखिएगा, this just cause changes from time to time. Organized crime will stay there. Terrorism is an organized crime, but this just cause, the justification of that organized crime changes from time to time. There was a time when nationalism was the reason for organized terrorism. Very good example, First World War. किसी को idea First World War कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? नहीं, इमीडिएट पॉइंट क्या था? हाँ, किसी के प्रिंस को टपका दिया था हमने. हाँ, Prince of Austria was executed, killed by the Serbian nationalists, the people of Serbia who were fighting for the nationhood. He killed the Prince of Austria and the First World War started because counter reaction होते चले गए. At before First World War and up till you can say Second World War, before First World War, particularly up to Second World War, when the majority of the world got independence, terrorism was associated with nationalism. Bhagat Singh, I told you the example. He was a part of Indian national movement. He was executed by the Britishers on the ground of being a terrorist. So remember, ये just cause हमेशा बदलता है. आज ये just cause क्या है? Majority हम इसे associate करते हैं जिहाद से. But understand this, it's a narrative.
मैंने वो पहले भी समझा, reality is what you believe, it's a lie collectively believed upon. तो जिहाद आज एसोसिएट किया जाता है बिकॉज ऑफ अमेरिका, बिकॉज अमेरिका इज अ क्रिश्चियन कंट्री. America is Christian and America controls the world's narrative. You see movies, of course, Hollywood movies, you see movies, social media, everything is America dominated. Whichever person America considers enemy, the world considers enemy. And America considers jihad, Islam as a problem. I can personally guarantee if America would be a Islamic country, rather than Islamophobia in the world, today there will be Christianophobia. There is no Christianophobia in the world because America is Christian and it's control the narratives of the world because it controls the social media. देखिए सारे चैनल कहाँ के हैं? Who saves the world in Hollywood movies? America. Whose books you read? American authors. Which place you want to visit? America. America controls the mind through its power, something we call soft power. समझ में आया सबको? This kind of mental domination is called, हाँ अंबर फैंग की बात हो रही है. This kind of mental domination is called soft power. Soft power is a powers that works on the mind subconsciously. Hard power is one when I put a gun over your head, make you do anything. That's hard power. Soft power is I did not put anything on you and you will still follow what I want. For example, love. You like some person, you manipulate your identity just because that person can stay with you. उसने कुछ नहीं करा, उसने कोई गनपट्टी में बंदूक भी नहीं रखी. Just because you want that person to be with you, you manipulate your identity according to that person. That is soft power. And America controls the world soft power. चाहे मैं पसंद हो ना पसंद हो अलग बात है. Clear to everyone? तो याद रखिएगा, terrorism means organized crime with a just cause. This just cause changes over time, over place and over community. Depend करता है which community you belongs to, which place you belongs to, which time you belongs to. This just cause will keep on changing. अब देखते हैं provision में क्या लाया गया है. A significant development is the inclusion of formal definition of terrorism within this legal framework. The law now defines a terrorist as an individual who commits act either within India or abroad with the intention of threatening the national unity, integrity and security. फिर से वही है. So virtually government can brand anything as terrorism. So congratulations to all of you. ठीक है, clear है? Next, the definition also covers, this terrorism definition also covers acts meant to intimidate the public or disrupt public order. ये तो और भी बड़ी term है. The provision of confiscation of terrorist property, चलो इससे तो ठीक है. बात समझ में आया? How the terrorists are now seen? Now we have a vast definition of terrorism. देखते हैं कब तक ये कहानी चलेगी. तो उसमें I told you earlier also, we have to blame the starting leaders also. They kept these provisions. नहीं रखने चाहिए थे. ठीक है, you should treat your own people in different laws. ठीक है, do not treat them like a terrorist. You may disagree, that's different. Until unless violence is not used. A component that should be here जो नहीं है, violence. If you are, मान लेते हैं you are carrying out a rally against the government, fine. But if you use violence, then there will be terrorism. So this component we can include, नहीं है तो अलग बात है. I hope Supreme Court will bring better. Next, better criminal justice process. So we have understood sedition, terrorism, the crime related to women. Next is better criminal justice process. The government is determined to achieve justice within, है ना, lofty goals sometimes we make. Justice within 3 years. कैसे आएगा किसी को नहीं पता. The problem with our justice system is judicial and police reforms. Police is overburdened, incompetent because of not proper training. Evidence collection is not good. Judiciary is excessively burdened. And because of this I don't think ये goal होने वाला है, but फिर भी सुनने में अच्छा लग रहा है कि within 3 years a court will deliver, मतलब the entire process will end for all citizens, aligning with the principle of accessible and speedy justice. तो ये होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, देख लेना. No, ये provision अच्छा है. This is a good provision. No arrest can be made without prior approval from an officer at least of the rank of DSP for any punishment which is less than
3 years for individual above 60 years. So any crime that has a punishment of less than 3 years, or if you are above 60 years of a person, then for every crime you can be arrested only and only after order of a DSP rank officer minimum. ये अच्छा प्रोविजन है, बिकॉज लोअर पुलिस की बड़ी प्रॉब्लम है, वो किसी को भी पकड़ते फिरते, they literally arrest anyone. So I believe it's a good provision, but पता नहीं कब तक चलेगा. The police must consult with the victim before withdrawing a case punishable by 7 years or more. ये भी अच्छा provision है, because in a lot of cases the police withdraw the cases. आप समझ जाइए किनकी बात हो रही है, powerful connected people. So you do not discuss with the victim, you withdraw the cases. भाई fake था case. अब ये provision अच्छा करा गया है कि you have to consult victim first. His or her consultation will be the part before you withdraw the case if it is punishable by more than 7 years. Of course ये heinous crimes की बात हो रही है, तो दोनों provision बहुत अच्छे हैं. There is an explicit provision on the registration of ये अच्छा है. Right now शायद आपने नाम सुना होगा, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं हाँ जीरो FIR. अच्छा प्रोविजन है, पर ये लॉ में कहीं नहीं है, ये इवोल्यूशन हुआ था ओवर टाइम सुप्रीम कोर्ट के थ्रू. You can file an FIR in any police station in India against anyone in any state. मान लेते हैं यूपी में, जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ गर्ल, ही फाइल्ड अ केस इन दिल्ली अगेंस्ट सम नेता ऑफ बीजेपी इन यूपी बिकॉज शी न्यू नोबडी विल फाइल एन FIR इन यूपी, इतनी किसी की औकात नहीं है. तो शी केम टू दिल्ली बिकॉज शी न्यू दिल्ली पुलिस डज नॉट कम अंडर यूपी गवर्नमेंट, इट कम्स अंडर डायरेक्टली द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दे डू नॉट फियर द यूपी गवर्नमेंट. So she filed a FIR here. इससे फायदा क्या होता है? Zero FIR. You can file that FIR anywhere in the country, and then that FIR is transferred to the concerned place. FIR means a court record. Once an FIR is filed, the police has to investigate because this FIR cannot be withdrawn without court's permission. और कोर्ट पूछेगा after FIR, the court will ask कहाँ क्या हुआ इस FIR पे. Then the police person has to reply what happened. अगर नहीं होगा तो बहुत बुरी डांट पड़ने वाली है. बात समझ में आता है? दिस इज अ वेरी गुड प्रोविजन. तो अब इसे क्या करा गया है? दे आर इंक्लूडिंग दिस इन द लॉ. द लॉ सेज दैट यू कैन रजिस्टर एनी, देखिए कैसा ऑफेंस है, cognizable offense. Cognizable offense means an offense in which police can suo motu arrest anyone. अब cognizable offense or the offense where the police can suo motu arrest you, detain you, restrain you. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर डेंजरसली ड्राइविंग अ कार, अब वो वेट थोड़ी ना करेंगे, पहले आप जाके भिड़ जाओ कहीं पे फिर हम अरेस्ट करेंगे. यस, विदाउट वारंट नंबर, वारंट बाद में आता है इसमें. इट इज विदाउट वारंट, दे कैन अरेस्ट यू एनीवेयर, anytime, and if they feel that you're committing something that is likely to endanger the larger public welfare. These are called cognizable offense. दूसरे होते हैं नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. इन दैट ऑफेंस अ वारंट ऑफ द कोर्ट अप्लाई. पहले पुलिस जाएगी कोर्ट, वारंट लेगी, तब आपको अरेस्ट करने आएगी, उससे पहले अरेस्ट नहीं कर सकती. तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में वैसे तो देखा जाए तो कुछ भी कवर हो जाता है. तो ये अच्छा है कि यू कैन रजिस्टर एनी कंप्लेंट, एनी FIR इन अ पुलिस स्टेशन फॉर एनी cognizable offense. ठीक है. नेक्स्ट, टाइम बाउंड लीगल प्रोसीजर्स. तो जीरो FIR लॉ में नहीं था, अब ये लॉ में डाल रहे हैं. पहले ये सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन पे था, फर्क समझ में आया? एक पहले लॉ में नहीं था, इंटरप्रिटेशन बेस पे आया था, अब लॉ में लिखा जा रहा है प्रॉपर्ली, ये ज्यादा बेटर है. नेक्स्ट, टाइम बाउंड लीगल प्रोसीजर. टू एनहांस एफिशिएंसी द प्रपोज्ड बिल इंट्रोड्यूस टाइम बाउंड प्रोसीजर्स. ये भी अच्छा प्रोविजन है अगर इंप्लीमेंट हुआ तो. If they are able to implement this provision, it's a good provision. The charge sheet. After FIR, what happens? FIR may they put a lot of charges. Then they investigate and create charge sheet. That charge sheet goes to the court. The court then carry out a trial over charge sheet to decide which of these charges can be upholded and which of these charges must be dropped. After that trial starts. So there are two trials actually. One trial is to frame charges, and the second trial after framing of charges to punish. ठीक है? The two kind of trials. So what will happen? A charge sheet must be filed within 90 days because police takes extraordinary time. क्या बात हो, 3-3, 4-4 साल बाद चार्ज शीट आई है. ठीक है, डिपेंड अपॉन द क्राइम. तो चार्ज शीट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 90 days with a provision for additional 90 days upon court's approval. So once an FIR is there, within 90 days you must create a charge sheet.
And if you are unable to do that, go to the court, ask them a permission of additional 90 days. Investigation must be concluded within 180 days leading to the final trial. ठीक है, तो कोर्ट टाइम बाउंड प्रोसीजर है, सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है. फॉलोइंग द ट्रायल द कोर्ट इज मैंडेटेड टू डिलीवर जजमेंट विद इन 30 डेज. तो बहुत ही मस्त बनाया है लॉ, ठीक है, लेकिन ये मस्त चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता. द प्रॉब्लम विद दिस लॉ इज इट इज टू टाइम्ड. लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज अनदर थिंग इज entire burden because of this provision is on police and judiciary, not on politicians. You are the prime responsible person here. Make more recruitment. Supreme Court has given numerous judgment for reforms in police. आप करेंगे as a part of internal security में, you will do a 7-point judgment Supreme Court की प्रकाश सिंह case. In this case, Supreme Court gave numerous reforms measures in police. None of them have been implemented by the governments because they do not like them. It will dilute government's power over police. And this power was created by Britishers. Nowhere, even in British-owned country, UK maybe police is not directly controlled by politicians. It is fairly autonomous. India mein police is directly under control of politicians. And that's how they manipulate. मैंने आपको example भी बताया था, that Home Minister of Haryana, वो बिज जो भी नाम है, ठीक है, that person basically said, the journalist asked, why shouldn't you implement the reform in police? He said, what is the point of becoming a minister if I could not transfer some IPS here and there? क्या करूंगा वैसी मिनिस्ट्री में बन के? This is the problem, that why criminals love politics. You are a criminal, an IPS officer who slapped you, the next day he will salute you. You are a criminal, he slapped you, you become a minister, he will salute you. Change of role. ठीक है, तो पुलिस मस्ट बी ऑटोनोमस. तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बट आई कैन गारंटी इट विल नेवर हैपन until unless you bring police reforms and judicial reforms, and that reform will never come because nobody wants them. Why nobody wants them? Because parliament mein you have 24% people with crimes, 12% people with heinous crimes like rapes and murders. आपने उन्हें संसद में बिठाया हुआ है, and then you imagine कि they will bring this reform. I don't think, but nonetheless provision is good. Implementation का कुछ नहीं कह सकते. This is another provision, trial in absentia. This is for people like Dawood Ibrahim, Vijay Mallya and who not. What happens is, as soon as an FIR is registered, something like this, you flee the country. A problem is, if you are not present in the country, police investigate करे तो करे कैसे? Because if you are present, then police can ask questions, create testimonies and all. But if you are not present, then how would they prosecute you? So now the provision is, even if you are not present, the police can continue their investigation and can submit in the court, and court can continue the procedure. अभी ऐसा नहीं होता था. If you are not present, the court issue warrants. And if you are out of country, the court issue warrants that goes to Interpol. Interpol issue corner notice, जैसे बोलते हैं red corner, blue corner notice. Under this, if मान लेते हैं in your name there is a red corner notice, then any country of the world, if you are found anywhere, they will arrest you, and then they will produce you or send you the country on whose request the notice has been created. समझ में आया? This is the process, but largely होता नहीं है. मान लेते हैं दाऊद इब्राहिम पे we have a red corner notice, पाकिस्तान का भी अरेस्ट करेगा उसे? अगेन वही वाली बात है, somebody's criminal is always somebody's favorite person. तो उनके लिए तो वो व्यक्ति अच्छा है. तो anyway, so any fugitive criminal like Dawood Ibrahim who have evaded the law, new code introduced trial in absentia. It means the session court can declare such individual as absconder, facilitating the trial proceeding in their absence, ultimately leading to a sentencing. तो provision अच्छा है, ठीक है. Practicality मुझे नहीं पता. Curtailing political influence in punishment waivers. देखते हैं इसमें क्या करा है इन्होंने. To prevent the misuse of punishment waiver by political entities. जैसे for example, मैं अपनी जान के रिस्क पे बोल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ. That person had a lot of criminal cases against him. The second he came to power, he withdrew all the cases. He became CM, सारे केस withdraw कर लिए गए. तो ऐसे भी दुनिया में होता है. So to prevent such kind of misuse, a new provision stipulates that sentence can only be commuted to life imprisonment. Because who is governor? Governor does this in state and president does this in union.
मान लेते you are given a death penalty, you got elected, then you use political influence. You know somebody who knows somebody and who know the president or the governor. You use that political influence and the governor and the president often pardon you. चाहे आपने कुछ भी करा. This happened in America. America में there was a person, Richard Nixon. So what happened America में, there is a tradition. If the president retires, dies, resigns, the vice president automatically becomes the president for the remainder of the term. Automatically. So what he did is, he was convicted. So he basically negotiated with his vice president. He said, I will resign, you become president and you will pardon me. Otherwise, right now I'm president, I will rusticate you, I will appoint somebody else as vice president who will free me. So they had a deal. He resigned, the vice president became the president, he pardoned the president. ठीक है? Of the crime. So ऐसे game चलते हैं if you are powerful. So this is what they are trying to do, that if so that death penalty, at least if you are given death penalty, of course you have done a heinous crime. So that crime can never be pardoned. It can only be commuted to life imprisonment. Provision अच्छा है, देखते हैं क्या होता है. And that too, it can only be granted within 7 years. Because obviously बात है, इसमें प्रेसिडेंट वर्ड नहीं लिखा जाता, मुझे लगता है प्रेसिडेंट भी होगा. अब 7 years क्यों रखा गया है? For example, current is BJP government. You are given that penalty. You will wait for Congress government to come because you are a Congressy. ठीक है? Then you will use the Congress government. तो इसलिए टाइम लिमिट दी गई है. इससे क्या तकलीफ है? नेक्स्ट इज लिवरेजिंग फॉरेन साइंस. तो कॉमन है, चलो ठीक है, क्लियर. देख लेना, बाकी ये तो सिंपल है. कंसर्न्स एंड ओमिशंस. पहला, व्हाट आर द प्रॉब्लम विद द लॉ. अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर फ्यू प्रोविजन. को सारे करवाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए. वी विल कंटिन्यू पार्ट्स प्रोविजंस. ठीक है, अभी कुछ कर रहे हैं, अगली बार कुछ करेंगे, ऐसे करते करते वी विल फिनिश द एंटायर थिंग. फर्स्ट इज चैलेंजेस इन एड्रेसिंग torture and criminal. While the bill aims to criminalize torture to some extent, the absence of the change in evidence legislation regarding recovering evidence based on police statements. Constitution में you have Article 22 and then Article 20. Article 20 protects you from giving any self-incriminating evidence. Article 20 says, even if in a police station a statement has been taken, it is not valid in the court of law. इसीलिए पुलिस वाले if makes you sign anything, कुछ भी साइन कर दो. If they say you are आतंकवादी, you won't have to sign this, कर दो sign, because it doesn't matter. No statement given in front of a police person is valid in the court of law. बात समझ में आई? So for that, इसके लिए what they use? Torture. Why we included this provision in the constitution? Because of Britishers. Britishers during their time did the same thing. The police of the Britishers, जो हम ही थे, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट में अच्छा बात याद आया मुझे, जलियांवाला बाग आई वेंट. सो देयर वाज अ पर्सन, ही वाज लाइक हाउ क्रूअल वर द ब्रिटिशर्स, एंड आई वाज लाइक हु फायर्ड द बुलेट. द ऑर्डर केम फ्रॉम अ ब्रिटिशर्स. इट वाज द इंडियन सोल्जर्स हु फायर्ड द बुलेट. सो rather than calling them cruel, अब फॉर एग्जांपल जनरल डायर मे बी अ टेररिस्ट फॉर अस, ही किल्ड अस. फर्स्ट ऑफ ऑल ही गेव द ऑर्डर. द आर्मी दैट फायर्ड वाज इंडियन. ठीक है, तो ब्लेम उन्हें करने से पहले लुक एट योरसेल्फ, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, ऑफ कोर्स if same thing happens in Jammu Kashmir, मान लेते some rally under Burhan Wani's command is happening and the Indian army retaliates and they are killed, so of course they will remember that, like Jallianwala Bagh, if they get independence. So always remember where you stand changes everything. Okay, that came to my mind because of torture and all. Britishers used this. They used to torture the people, they used to arrest them, torture them, and made them sign anything, made them write anything. So we included a provision in the constitution that no statement given in a police station is valid in the court of law. Okay, please remember that. Criminalization and punishment approach. This entire bill assumes you have done a crime, you will be punished, but it does not look at the complexities of these problems. There are a lot of criminals who are not habitual offenders, who become offender because of the reason. Like for example, Nirbhaya case. I am not justifying those men. If you have seen India's Daughter, देखिए किसी डॉक्यूमेंट्री, बीजेपी ने बैन कर दी, देखोगे ऐसे. So anyway, अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, watch it. बैन है कोई बात नहीं, देख लेना. So in that documentary, they carried out a socio-economic profile of the perpetrator, and the entire documentary highlighted one thing, that these people, they never consider women like human.
Why? Because they come from a particular background. They have lived with a certain circumstances where the women were anyway not treated like a human being. So for them, that girl was nothing more than a commodity. India's daughter, document है India's daughter, कोई British ने बनाई है, I don't know. So why it happened? देखिए, now if they would have lived with a good value system, if they would be fortunate to attend UPSC coaching, maybe they would not like the person they turned out to be. Remember, majority, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं who are literally bad people, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, but they are always in minority, maybe 10%, 20%. But for them, we will brand everyone. A majority of the people are criminal out of circumstances, their upbringing, their education system, the kind of abuse they suffered. ये बहुत common है. If you suffer abuse in your childhood, there are high chances you will turn out to be a delinquent, a criminal tendency person. It's very common. I'm not saying for everyone. I'm saying it's common. So बात समझ में आई? There are a lot of things that is this point is saying. You are looking at crime and punishment. Why you are not looking at the broader picture of dealing with the complexity leading to a crime? बात समझ में आया सबको? So this is one weakness. इसका सरकार I believe कुछ नहीं कर सकती. This only goes with the society. It's the failure of the society particularly. Limitation on legislative measure मैंने आपको समझाई दिया था. Doesn't matter how many laws you make. If you are unable to implement, क्या करोगे उनका? Addressing colonial legacy. There are a lot of provision. I told you this IPC was made by the Britishers, CRPC was made by the Britishers. So it has a lot of provision that are of British origin. Their value system, their orientation are here. All laws are written from their perspective of a crime. बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो इसके लिए it is trying to bring the change. चलो यही है, मैं थक गया था, 1 घंटा हो गया. ठीक है, क्लियर है this news? So few provision we have done this class में. Next class में we will have more and ऐसे ही we will continue whenever a new news, new provision will come. क्योंकि it's a big legal document. इसमें बहुत time लगेगा people को to analyze. So as soon as the new things will come, we will continue to do. Next is cloudburst. It is from geography. Recently Himachal में, you know what happened in that context. This is given. So what is a cloudburst? Any idea to anyone? अदल का पटना हिंदी नहीं पूछी थी भाई. What is cloudburst? Intense rainfall at a very short period of time. When there is intense rainfall in a short period of time in a small geography, it is called cloudburst. And how it happens? देखिए इसमें लिखा है intense localized burst of rain often occurring in hilly region. Why? आपको आइडिया हो क्लाउड कैसे बनते हैं? क्लाउड के लिए द वाटर, देयर 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. कंडेंसेशन, न्यूक्लियाइज. आपने सुना ना, वो कहते हैं कि हवन कराओ बारिश हो जाएगी. सही कहते हैं. Because what happens, हवन, बारिश नहीं हो रही, let's have a हवन, you know, that puja or something, and the rain come. In movies you see there is a bit of science there and a lot of fiction. What is the bit of science? To condensation nuclei. As such, water is everywhere. यहाँ पे भी water बहुत सारा है. In this room there is a lot of water in air. To have that water converted into a cloud, you need a nuclei, a place where the water droplet can sit. When you burn fire, coal and everything, it creates particulate matters in the air. Those particulate matters पे the water droplet can deposit. तो cloud formation में सबसे important क्या होता है? एक substrate. समझ में आया? And that's why we use, for example, when we have to carry out artificial rain, हम क्या करते हैं? We use some compounds like salt and all. They go through the plane, they spray them on the clouds. They become condensation nuclei. Salt and everything is available. The water droplet will collide there and get coolants and ultimately fall. Predictability clear नहीं होती. यहाँ तक clear हुआ? After that, clouds are formed. You have condensation nuclei which attract water and cloud forms. The cloud then travel, of course, as the wind goes, and then they hit a mountain. As soon as they hit a mountain, they start to go up in the atmosphere at a rapid pace. As they go up, the water start to condenses. Of course, water will condense. Condensation nuclei is already there. The water is collecting there, and it start to condense. Keep on condensing until unless the droplet becomes sufficiently bigger. When it becomes sufficiently bigger, out of gravity, it comes down.
That's how rains happen. को समझ में आया? अब what happens in hilly areas is, normal case में क्या होता है? The clouds take time. Clouds take time to condense and precipitate. Hilly areas में, because there is a mountain and clouds go rapidly up and they condense at a rapid pace, because of which the droplet forms at a rapid pace, and that's why there is strong raining in hilly areas. That is what is happening right now. This is called cloud burst. सबको समझ आया what is cloud burst? तो इसमें लिखा मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ. Cloud burst is actually a situation when the intermolecular forces between the H2O water molecule get very high due to rapid decrease in temperature. They are going up, rapid decrease in temperature, and excessive electrostatic induction. You know that energy burst जो होता है, जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, thunderstorm and all. ठीक है, that keeps on accumulating there. Friction, air से when friction happen, static friction शायद आपको idea होगा. When you rub something, it develops charges. ठीक है, same thing. So when air में the clouds are going up, they also develop charges because of the friction with the air. So that is called electrostatic induction. This electrostatic induction makes sure even if the droplet is bigger to fall, it does not fall. Droplet has been formed sufficient. It can easily fall. But the problem is because of excessive electrostatic induction, it is unable to fall. It clings there till the time it reaches to a height where it can no longer hold itself. पहले क्या होगा, छोटी छोटी droplets होती हैं, but because the droplet is unable to fall, it keeps on getting bigger and then it falls at a rapid pace. ठीक है, excessive electrostatic induction causes the lightning to remain inside the cloud only, which causes hyper energy inside the cloud. एक तरफ cloud बढ़ता जा रहा है, electrostatic induction is happening, which is making the droplet not to drop. अगर drop करता है तो कहानी खत्म. As the cloud is rising, whichever droplet condenses, it fall. तो इससे क्या होगा? It will uniformly precipitate over the entire hill. But because there is excessive electrostatic induction, the friction based, there is too much energy in the cloud. The droplets are big, but they're unable to fall. And cloud is going up at a rapid pace, so they keep on getting bigger, bigger and bigger. And ultimately they reach to a level when they all fall at the one time. And that is what we call cloud burst. वही लिखा है ना, the weight is such that the water no longer able to maintain the force within the cloud, they precipitate. Causes मैंने आपको बता दिया. Usually clouds on the mountain and mixing of warm air parcel with cold air parcel. ये भी होता है. Two air parcel you have, the warm and the cold. Of course, the warm air has more moisture. आपको idea होगा, warm air has more moisture. The cold air is dry. If when they collide together, the warm air rapidly cools down, and because of the same process that happens on mountains. ठीक है, क्लियर? यही इसमें देखा होगा. अब क्या हुआ? जूम ज्यादा हो गया. Next is magnitude of cloud burst. During a cloud burst, a relatively small area witnesses an astonishing large amount of precipitation around. The criteria is if an area receives 10% of the rain within a few hours or few days, what it receives in the entire year, it is considered as a case of cloud burst. तो ये criteria याद रखिएगा सब लोग. दिल्ली में भी आई थिंक 5 to 6% समथिंग हुआ था, 10 नहीं था. लोकलाइज इम्पैक्ट एंड ये तो सबको आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसे क्या बताना. मेन इशू इज व्हाई वी आर अनेबल टू नो देम अर्लियर. अभी हालांकि वी हैव सफिशिएंट गुड टेक्नोलॉजी, तो वी कैन प्रेडिक्ट, बट स्टिल वी नीड अ लॉन्गर ड्यूरेशन. Why, if there is a chances of cloud burst, I have to rescue people. That requires time, but time is not available. Why? Because IMD can offer forecast about likelihood of heavy rainfall. Now IMD never gives a warning of cloud burst. It gives a warning there are chances that the rain will be heavy, severe heavy. It may turn out to be a cloud burst is a different thing, because we do not have that technology right now. Forecasts tend to become less accurate as they narrow down to a small geographical region.
तो टू वीकनेस समझ में आई. फर्स्ट वीकनेस इज वी आर अनेबल टू प्रेडिक्ट क्लाउड बर्स्ट at a longer time, at a earlier advances. Second, we are unable to know the localized events if it happens. It's very hard to predict. Despite advancement, our current technology still lacks the capability to predict. Alert for heavy rain can be issued within window of 4 to 5. तो मतलब अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास. हालांकि राइट नाउ IMD predictions are very good. पहले there used to be time 20-30 years back, if there was a joke, if IMD has said there will be rain today, there will surely be sun. Look, people used to joke, today IMD has given a warning, there will be rain, of course there will be a sun, because at that point technology was not very good. Now we have sufficiently good technology, but still we need advancement. We have come to the level from where we were predicting wrong to the level we are predicting right, but the time limit is 4 to 5. We have to increase it further, at least 10 days before the event. और इसमें टाइम लगेगा, देखते क्या होता है. इसमें क्या बताऊं मैं आपको. चेंजिंग पैटर्न इन क्लाइमेट चेंज आपको बताया था मैंने पहले भी. बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज द इरेटिक वेदर्स आर कमिंग एंड इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट देम नाउ. ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस अग्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे पेरिस अग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट चेंज, सेंडाई फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. 3-4 अग्रीमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट है, सेकंड इज सेंडाई, थर्ड यू हैव इज SDG. मैंने पहले ही बताया था, SDGs आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो ऑल द गोल्स बाय हार्ट. तो Sendai framework for disaster risk reduction was adopted in UN World Conference on Disaster Risk Reduction held in Sendai, Japan. It's a 15-year, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है ये. It's a 15-year non-binding agreement which countries try to implement in their national policies. It has 7 global targets. What are the targets? Reducing global disaster mortality, reducing number of people affected, reducing direct economic loss, reducing damage to critical infrastructure, increasing number of countries with national and local DRR strategy, substantially enhancing international cooperation and early warning systems. Okay, these are the key points. Remember, these are the 7 goals of Sendai framework. What is Sendai framework? It's a framework that deals with disaster risk reduction. Okay, very important, along with Paris Agreement and Sustainable Development Goal. It's a very important agreement. To implement Sendai framework, Government of India has brought National Disaster Management Plan. 2016 में लाई थी ये. It is based on the Sendai framework. The parameters available there, namely understanding the disaster risk, improving disaster risk governance. Disaster risk governance means first you will understand what are the disasters that are likely to cause. Then you will include them in your development strategy. That is called disaster governance. Kitna hota hai, I don't know, because Government of India has a very bad record on this. On climate change, they have a good record. On Paris Agreement, India has a very good record of following the recommendations. Very good, better than any country on the earth. But in disaster and environment, India has a very bad record. Environment Performance Index में India is very bad. In Paris में Climate Change Index में India is very good, because priority matters. जैसे for example चार धाम योजना. चार धाम योजना में गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट 4-lane हाईवे इन हिमालयास. सुनने में अच्छा लगता है, चलाने में भी मजा आएगा. ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू विल ड्राइव योर बाइक एंड कार ओवर दिस 4-lane हाईवे, मजा आएगा, वो भी हिमालयास में. बट दैट वाज अ इकोलॉजिकल डिजास्टर. हिमालयास में 4-lane हाईवे, पता नहीं क्या सोच रहे थे लोग. ठीक है. एंड लुक एट व्हाट हैपेंड टू 4-lane हाईवेज ऑफ हिमाचल प्रदेश. अब वो 1 lane भी नहीं बचे हैं. ठीक है. तो दिस इज द प्रॉब्लम. आई नो, देखिए डेवलपमेंट इज नेसेसरी, बिल्कुल नेसेसरी है, बट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वी हैव टू मेक अ प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज. तो 4-lane नहीं करना चाहिए था, 2-lane काफी था. ठीक है. 2-lane, नैरो 2-lane, ब्रॉड 2 lanes नहीं, नैरो 2 lanes वर सफिशिएंट. बाकी तो रीजन आपको पता ही है.
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। समझ में आया टर्म का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग डिजास्टर रिस्क इन एवरी गवर्नमेंट एक्टिविटीज ऑफ डेवलपमेंट एंड अदरवाइज। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, and last is disaster preparedness. These are the 4 points of India's National Disaster Management Plan 2016. It covers all phases of disaster, of course, preventing the disaster, then mitigating any event like disasters. If disaster happen, then response and recovery over time. So these are the 4 stages of disaster management. आप करेंगे वैसे chapter GS3 में you have disaster as a proper subject. ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इज डिफरेंट सब्जेक्ट। तो 4 स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आर प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिवेंशन। डू नॉट अलाउ डिजास्टर टू हैपन। रिमेंबर द नेचर हैज नेचुरल हैजर्ड्स, दे कन्वर्ट इनटू डिजास्टर बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। earthquake does not kill people, the buildings humans have created kills people. Majority of the buildings do not follow earthquake guidelines बनाते समय। What happened in Himachal Pradesh? NGT, National Green Tribunal, has recommended no house shall be constructed on a slope greater than 45 degree. Any slope that is greater than 45 degree, you should not construct any house. And 90% of house in Himachal Pradesh are constructed on 60 to 80% of slope. So कहाँ 45 is a recommendation and you're constructing house on a 60 to 80% of the slope. अब इतने steep slope पे बनाओगे तो क्या होगा? And देखिए टूरिज्म ने तो बर्बाद किया ही है इन जगहों को। these are ecological. देखिए these are very fragile ecology. आपका जितना हिमालयाज है, इट्स अ वेरी फ्रेजाइल इकोलॉजिकल सिस्टम। जितना ज्यादा टूरिज्म वहां पे बढ़ रहा है, इट इज डिस्ट्रॉइंग देयर इकोलॉजी। तो क्या आप वहां जाते हो कुछ भी फेंकते हो? हाँ, कुछ भी फेंक देते हो, जो खाया वही फेंक दिया, एंड इट्स लिटरली डिस्टर्बिंग द इकोलॉजी। तो वो तो एक अलग बात है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। उनको ये घर बनाने की इजाजत दी किसने? भाई ऑब्वियसली बात है, किसी ने तो पैसा खाया है इसमें। जब एनजीटी ऑर्डर इज नो हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ स्लोप ग्रेटर देन 45, you are constructing houses on 60 and plus slope. Of course somebody has taken something, तो यही प्रॉब्लम होती है। Now government of Himachal Pradesh has given orders to the people to vacate the houses. अब लोग कह रहे हैं हम कहाँ जाए? सही बात है उनकी भी, पहले आपने बनने दिया। अब हो सकता है these are not first generation people, हो सकता है किसी से उन्होंने घर खरीदा ही हो। अब now they have invested everything on the house, now you are asking those people to go out of the state. वो कह रहे हैं शिमला से भागो, निकलो यहाँ से। अब भाई that person who has invested his entire money in buying a house which is illegally constructed on a larger slope, now you are asking them to go out of it. तो यही प्रॉब्लम है। Same thing we discussed in Tina Dabi's case that she did with the people. Legality is one thing, but there is something called human morality. First you find a place for those people to live, arrange for rehabilitation, फिर उनसे बोलो वहां से जाओ। नहीं तो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री का घर है उसमें रखो। सीधी बात है, तुम्हारे घर हमने फ्री में नहीं दिया, तुम्हारा भी घर है, तुम भी भागो, या तो उसमें रखो, नहीं तो उन्हें जाने को मत बोलो। अब लिटरली पीपल आर इन प्रॉब्लम है, कहाँ जाएंगे? आपने तो बोल दिया बड़े मजे में दीज आर इलीगल हाउसेस, निकलो यहाँ से। द पीपल फॉर देम इट इज एवरीथिंग। तो दैट इज द पॉइंट वी हैव टू ऑलवेज हैव कि गवर्नेंस शुड बी बेटर। ऑलवेज देखिए हम हर बार एक ही चीज पे आके अटक जाते हैं, करेगा कौन पे? There are problems and there are solutions for every problem, but the only questions we cannot answer is who will do them. That's always the perennial question. ठीक है, keep that in mind. उसके अलावा it will have, so these are three other point of India's national management, that is regional approach, greater emphasis on information, education, communication, basically increasing awareness about disaster preparedness, ethical guideline for media coverage and regular media briefings. ठीक है, please remember, primarily remember these 4 points that National Disaster Management Plan tries to achieve: disaster understanding, risk governance, reduction and preparedness. ठीक है, चलिए दिस न्यूज वी हैड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी वे फॉरवर्ड पढ़ लेना खुद ही। नेक्स्ट इज ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। मतलब टीबी भी ड्रग रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है,
पर पंजाबी नहीं कर पा रहे ठीक है. So, what is drug resistant TB? Let's see. TB we all know tuberculosis. ठीक है. The formidable problem of drug resistant TB necessitates the immediate and the serious consideration. Given the India's beer, देखिए, a quarter of the global burden of TB cases. पूरी दुनिया में all the TB cases का 25% happens in, at least 25% happens in India. And the reason is क्योंकि आप सबको Google से पूछ के चीजें करने में मजा आता है. The biggest problem of TB resistance is we have a proper dot course. Government of India provides it for free in government hospital at cost in private hospitals. It is available. There are numerous problems. पहला problem तो ये है people do not continue their course to the end. बहुत लोगों की आदत है 3 दिन दवाई खाई छोड़ देते हैं मैं ठीक हो गया भाई नहीं ठीक हुए. If you have a germ inside your body and if you do not complete the entire course आपको ठीक लग रहा है because that medicine has stopped the reaction. But इसका मतलब ये नहीं है the germs has died. So what will happen? You take a medicine, the germs inside your body they evolve. Next time you will get ill and you will have the same medicine, it will not work. बात समझ में आ रहा है? That's how you create drug resistant TB. You got TB, you were given a course. That course is around 6 to 7 months long. You did it for 2 to 3 months and you are feeling fine. You are like, चलो ठीक है हो गया कहानी खत्म. But what happens? That bacteria inside your body it's evolve. Next time you and evolves, it become more potent and it attacks even faster. Now next time you need even higher dose and it goes to 2 to 3 stages. After that there is no dose. सीधा दुआ ही काम आती है फिर. ठीक है. तो that we have to understand. Primarily TB affects lung, known as pulmonary tuberculosis. TB can be of different form. स्पाइन वगैरह हर जगह हो जाता है. ब्रेन, किडनी, स्पाइन कहीं भी हो सकता है पर प्राइमरली लंग्स में ही पाया जाता है. एंड इट इज कॉज्ड बाय, प्लीज रिमेंबर एवरीवन, बैक्टीरिया. एंड टीबी के साथ एक और प्रॉब्लम है, इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज. इट गोज फ्रॉम एयर. अब दिस इज अनदर प्रॉब्लम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू आइडेंटिफाई टीबी केसेस अर्ली. You have TB, आपको पता ही नहीं है. It takes year. It takes around 1 to 2 months to show the symptoms. By the time you show the symptoms, you have already infected 20 more. This is the biggest problem because we travel in public commute, मान लेते हैं metro में, train में. So you are coughing or you have हल्का फुल्का cough, you cough, that TB particle comes out, somebody inhales, that person gets the TB. By the time you get to know you have TB, it's too late. So the only way of preventing TB in India is early identification. The sooner we identify, the better it will be. बात समझ में आ सबको? This is the biggest reason. Tuberculosis में ये हो गया. Emergence of drug resistance मैंने आपको बता ही दिया. It is got by the bacterium can be inhaled by the people and the TB bacteria become immune to drugs. When you do not complete the course, it often happens the bacteria manipulates itself. तो वही है, पूरा कोर्स करना चाहिए. लैक ऑफ एक्सेस एप्रोप्रिएट ड्रग व्हाटएवर. टाइप्स ऑफ DRTB, ड्रग रेसिस्टेंट टीबी टाइप्स. पहला क्या है? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस. बेसिकली द ड्रग्स दैट वी यूज इज आइसोनिजेड एंड रिफेम्पिसिन. दीज आर रिफेम्पिसिन होना चाहिए यार ये. ठीक है. दीज आर द टू ड्रग्स दैट वी यूज इन टीबी. द टू ड्रग्स आर द बैकबोन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ all individual. But when you take these drugs, do not take it the entire course. You get what we call multi-drug resistance because 2 drugs are now not working on your body. उसके अलावा then you go to second line of defense. Second line of defense of TB is, इतना याद मत रखना, बस इतना याद रखना, there is first line of defense drug and there is second line of defense drug. नाम याद रखने की जरूरत है नहीं because you are not doctors here. ठीक है. And last में you have the third line of defense, that is, ये लास्ट है. आफ्टर दिस यू आर डेड. ठीक है. आफ्टर दिस आप भगवान के पास हो तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. इफ यू आर रेसिस्टेंट टू लास्ट लाइन ऑफ ड्रग, यू आर कॉल्ड एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी. ये लास्ट लाइन है, इसके बाद कोई लाइन नहीं है. ठीक है. इसका दी एंड आता है सीधा. अब व्हाट इज द रिकमेंडेशन? WHO एस्टिमेट अराउंड जो भी है 2 लाख समथिंग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट केसेस इमर्ज इन इंडिया एनुअली. हाउएवर 20 India aims to eliminate TB by, ये याद रखिएगा, what is the target of government of India?
एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025 होने वाला नहीं है, बट एनीवे टारगेट अच्छा है. With a target reducing TB cases to 44 per lakh of population, mortality 3 deaths per lakh and eliminating catastrophic cost. ये सारा है, लेकिन प्रॉब्लम देखिए अभी भी वही है. फर्स्ट, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज नॉट हैपनिंग. सेकंड, इवन इफ आइडेंटिफिकेशन हैपेंस, पीपल डू नॉट कंटिन्यू विद देयर कोर्स, और बहुत लेट करते हैं. डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते. खांसी आ रही है, कफ सिरप पी लो, ये पी लो, वो पी लो. होम रेमेडीज बहुत हैं. एक तो डॉक्टर्स डिग्री विग्री फाड़ देंगे किसी दिन अपनी, क्या ये होता है इंडिया में. होम रेमेडीज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं. किसी दोस्त से पूछते हाँ भाई क्या खाओ, अच्छा तेरा गला ठीक हो गया था, अच्छा रम का एक पैक लगाऊं, ठीक है. अरे यार इस डॉक्टर के पास चले जाओ, दिखा लो. चलिए एनीवे है, सरकारी पे चले जाओ, फ्री होता है वो. फ्री की एडवाइस कोई ऐसे नहीं दे रहा होता है. हाँ ये इशू है. गवर्नमेंट में एक चीज रखेगा, जो ओपीडी होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वो गवर्नमेंट का बेटर होता है. अगर इफ यू लिटरली हैव अ प्रॉब्लम, दे विल डायग्नोस एंड दे विल प्रोवाइड अ मेडिसिन. फालतू के टेस्ट नहीं करवाते हैं वो, इट्स बेटर. लेकिन वहां पर टाइम बहुत लगता है, इसलिए लोग जाते नहीं. प्राइवेट का इमरजेंसी अच्छा होता है. दे हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. इफ यू इन इमरजेंसी और अगर गवर्नमेंट पहुंच गया तो आप पक्का मर के ही वापस आने वाले हो. आपकी डेड बॉडी आएगी, जिंदा तो आओगे नहीं. प्राइवेट में इफ यू गो इन इमरजेंसी, दे मेंटेन वेल. ऑफ कोर्स इज नॉट अफोर्डेबल. तभी तो मोदी जी लाए हैं प्रधानमंत्री. अभी हाँ इसके बाद न्यूज है यार, हमारा टाइम ओवर हो गया, जल्दी से देख लेते हैं. इसीलिए हम एक नई प्यारी सी स्कीम लाए जिसका नाम है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. नो हिंदी इंपोजिशन हियर. So what happened recently? A CAG report was published. CAG is, it's a constitutional body. ठीक है. They have a different dispute on this. You will do in governance, वो अलग बात है. It has revealed there are numerous irregularities in registration and validation of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Let's see what it is. This is our information. CAG is under Article 148 to 151. This is your governance. GS paper 2 governance में आप करेंगे. CAG is appointed by the president on a non-renewable term of 6 years. ठीक है. Let's see the main thing here. आयुष्मान भारत is a flagship centrally sponsored. Word क्या है देखिए. It's a centrally sponsored scheme. मतलब both state and center contribute the money. There is another thing called central sector scheme. A central sector scheme means the entire money or entire expenditure will be borne by the central government. In this, there is a contribution of both the center and the state. Designed to achieve universal health coverage and the sustainable development goal. ठीक है, what is this? देख लेते हैं. It has two components: health and wellness centers and प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना covers secondary and tertiary care. Secondary and tertiary care is covered by प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, while health and wellness center covers primary care, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए. ठीक है. And health and wellness center were launched in 2020 to transform existing health center into comprehensive primary health care. So health and wellness center, which is a part of Ayushman Bharat, focuses on primary health care. Your PMJ focuses on secondary and tertiary health care. That is basically operations and all. Okay. And what it offers around 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitals with to over 12 crore poor and vulnerable families, which basically covers the 40% of India's population. For both rural and urban area, eligibility is determined by. इस सारे पॉइंट याद रखिएगा. That Ayushman Bharat has two components: health and wellness center and PMJ. Health and wellness center focus on primary health care. PMJ focus on secondary and tertiary health care. It provides 5 lakh rupee per family, individual नहीं, per family per year for hospitalization. It covers around, intention to cover is around 12 crore people, 12 crore poor and vulnerable families, individual नहीं, families. And the criteria is used is socio-economic caste census 2011. ठीक है. And the sharing मैंने आपको समझा ही दिया था. The sharing is between key feature. There are some good feature of this. पहला तो ये है, it is cashless.
It is very important. What happens is majority of the government scheme before PMJ were for the people, but they were not cashless. A problem ये थी, the people who are beneficiary enrolled in the scheme, if they have to spend first. You go to hospital, you spend first, then government reimburses you. अब इतना पैसा किसके पास है? So this is the most important component, which is very good, is it is cashless. You do not have to give any penny. Go to the hospital, get admitted and get the treatment. Government will directly pay to the hospital. And it covers both private and paneled hospital. The scheme covers for up to 3 days before hospitalization, and after hospitalization the diagnosis and medicine cost as well. ये भी जरूरी है, because a lot of schemes cover only hospitalization, including the insurance you take. Health insurance वगैरह जो लेते हैं ना, majority of the health insurance covers only hospitalization. If you get hospitalized, then only everything is covered. Before hospitalization and after hospitalization is not covered. उसमें ज़्यादा खर्चा आता है. You have to go for regular testing, you have to go for regular medicine, regular checkup. That takes the majority of the expenditure. That is called out of pocket expenditure. और याद रखिएगा, majority of India is one hospital bill away from poverty. Majority of India is only one hospital bill away from poverty. एक hospital bill आया and they goes in poverty. So therefore this, it's a good scheme. There is no restriction on family size, age or gender. Also it covers pre-existing medical condition. So ये provision बहुत अच्छे हैं इसके. That it covers all. It is cashless. It covers before 3 days of hospitalization to the after diagnosis and medicines. No restriction on family size, age, gender. Pre-existing medical facilities are covered, and most important, it is portable. A majority of the government scheme, I would say all of the government scheme, are not portable. For example, if you are getting a benefit in Chhattisgarh, you cannot avail that benefit in Delhi. Portability is not there, and this is the biggest problem. Khaskar the people who are migrants, जो labor and all class you see in Delhi, they are not Delhi people. They have come from UP, Bihar, Haryana से तो कोई नहीं आता. UP, Bihar basically. ठीक है, these people, whatever facility they have in UP and Bihar, if they can avail in Delhi, it will be better. This is called portability of benefits. This provide portability. ये एक अच्छा provision है इसमें. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बनाया है? We have created National Health Authority. It is the governing body of Ayushman Bharat. It is the governing body of Ayushman Bharat. What is the current status? Right now around 24 crore. 24.5 मान लो. Around 24 crore Ayushman cards have been generated. मतलब 24 crore के आसपास Ayushman card generate हुए. कितने लोग cover हैं किसी को नहीं पता फिलहाल तो. And panel hospital is around, एग्जैक्ट फिगर याद मत रखना, बस इतना याद रखो, अराउंड 24 करोड़ आर अवेलिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम अराउंड 30,000 हॉस्पिटल. अराउंड इज ओके बिकॉज नो एक्चुअल फिगर्स आर रिक्वायर्ड. अब व्हाट इज द कैग रिपोर्ट? व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस ऑल ड्रामा? बिकॉज कैग रिपोर्ट हैज हाइलाइटेड दैट ओनली 7.87 crore beneficiary household were registered, which is only 73% of the target. मैं फिर भी मानूंगा अच्छा टारगेट है. 73 is a good number. अब 100% का इसी स्कीम में नहीं होता. 73 भी है, इट्स अ गुड नंबर. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द मेजॉरिटी आउट ऑफ द 73 देयर इज अ लॉट ऑफ एरर्स इन इनवैलिड नेम्स, अनरियलिस्टिक बर्थ डेट, डुप्लीकेट आईडीज, इनएक्यूरेट फैमिली मेंबर्स. कुछ भी लिखवाया किसी ने भी. और इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है? हॉस्पिटल्स. देयर आर न्यूमरस रिपोर्ट दैट आयुष्मान भारत में करोड़ों का घपला हो रहा है. कैसे हो रहा है? हॉस्पिटल्स मरे हुए लोगों के ऑपरेशन दिखा रहे हैं. A person came who is dead and they show we carried out this operation, that operation, that operation, तभी ये मरा है. They generate a bill, उन्हें पता है गवर्नमेंट को बिल पे करना है. The person does not have to pay the bill, तो वो परवाह भी नहीं करता. If you do not have to pay the bill, आप परवाह भी नहीं करता. ठीक है, ठीक है. That person is dead. There are a lot of hospitals who have been blacklisted under this scheme because they have used such kind of tactics, unnecessary operations. तो मरे हुए पे ऑपरेशन कर रहे हैं. ऑपरेशन की जरूरत नहीं है. You have went there just you have a fever. सारे टेस्ट करवा मारे. क्यों? बिकॉज दे आर कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत. So there are a lot of manipulation. This is what I am saying. Government makes a lot of policies, government makes a lot of laws. The problem comes at implementation. अगर आप implementation अच्छा रखेंगे, even a moderate policy, moderate law can work better
than a good policy or a very good law. ठीक है. Next is ineligible household भी are receiving benefit. वो तो common sense है. आपके कनेक्शन में कुछ भी करवा लो. A lot of hospitals, even when they are on the Ayushman Bharat, they charges the people for any operation. Nominal fee के नाम पे चार्ज कर लेते हैं, जबकि चार्ज नहीं कर सकते. अब उन्हें पता क्या है. ठीक है, दे उसको एम्पैनल, दे थिंक हाँ भाई ऐसा ही होता होगा. और द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर इल और सम ऑफ योर रिलेटिव इज इल, आप उस वक्त पैसे के बारे में ना सोच भी नहीं रहे होते. यू आर लाइक दिस पर्सन मस्ट गेट गुड. अब लगता है तो लग जाए, बाद में देखेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव नॉट फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट हैव नॉट फॉर्म्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल यूनिट. ना डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है, ना ग्रीवेंस रिड्रेसल यूनिट है. इफ यू हैव अ ग्रीवेंस अगेंस्ट हॉस्पिटल, कहां जाओगे? बिकॉज देयर इज नो ग्रीवेंस यूनिट्स. So governance is always a problem. Only a small percentage of grievances are redressed. Obviously, बात है. When you have no unit of grievance redressal, so of course a small percentage will be redressed. Lack of anti-fraud cell, claim review committee, and mortality morbidity review committee. These all things are not available. And सबसे बढ़िया इसमें रिकॉर्ड किसका है? समझा करने में इसमें झंडे गाड़े हैं. ठीक है, इन ड्रामे में क्लियर है. तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज कवर दिस न्यूज इन डिटेल. डिटेल में पढ़ना है. व्हाट आर द फीचर, व्हाट इज नॉट देयर, व्हाट इज द कैग रिपोर्ट. एवरी सिंगल पॉइंट हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, बिकॉज यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. हेल्थ, वुमेन, एजुकेशन आर वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. दे ऑलवेज आर समथिंग और समथिंग एल्स. मॉर्बिडिटी मतलब हाथ पैर टूट जाना टाइम. Britain versus Brazil. देखिए, we have this scheme. Britain has something called National Health Service. That is universal health scheme. Every British person, this is universal. They can go to hospitals free of cost. Every single British person has that. So there was an argument, why shouldn't we have the universal scheme? Because what happens in such kind of scheme, जैसे मोदी जी की स्कीम है, there is always inclusion errors and exclusion errors. तो पहले भी मैंने आपको समझाया था. Inclusion माने the people who do not deserve the scheme get the scheme. Exclusion माने the people who deserve the scheme do not get the scheme. And in targeted scheme there are always inclusion exclusion errors. So we need a universal scheme. But what is the problem? We cannot afford it. India is 140 crore strong. इनको to give National Health Service kind of scheme, the British government spend around 10% of its GDP, and we spend 10% of GDP for a population which may be 1/10 of India. We spend 1% of our GDP, which is roughly equal to Britain. हमारी roughly बराबर है. They spend that GDP is 10% on their people, which is around 1/10 of India's population. We spend 1% of our GDP on a population which is 10 times more than Britain. This is the main focus. ठीक है, तो अमृत काल में ये मेन फोकस होना चाहिए. ठीक है, पर होगा नहीं, सभी सब नो. क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट. मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज डू दिस इन डिटेल. ठीक है, चलिए बाय बाय, हमारा कोर्स ओवर हुआ. These news I had for you today. So we will meet again next Saturday. Bye bye everyone. Have a nice weekend. वो कहाँ ले पाते हैं, यही तो मेन प्रॉब्लम है. एरर्स बहुत है ना, उन्हें पता नहीं होता, वेल नहीं कर पाते हैं फैसिलिटी. इसलिए हमें इसमें सजेशन है ना, जो आपकी यूनिट्स होनी चाहिए, गिवेंस रिड्रेसल यूनिट, वो बनाए ना, बनाता ही नहीं. फॉर एग्जांपल 2 साल हो गए, थर्ड ईयर yes, very welcome everyone. Bye bye.